देश में विकास हो रहा है, प्रदेश में विकास हो रहा है, और मतदान एक बहुत अहम चीज है। अगर हम जोर देते हैं कि मतदान का प्रयोग करें, तो सामान्य लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग विकलांगजन हैं, अलग अलग तरह की उनको विकलांगताएं हैं, तो वो सब ध्यान रखते हुए मेरे ख्याल से 2017 से जो विकलांग जनों की भागीदारी, सहभागिता है, उस पर भी जोर दिया जा रहा है कि हम लोग इनको ना छोड़ें, इनका भी मत होना चाहिए सरकार बनाने का। उनके साथ जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उनका भी हमें विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे जब हम पोलिंग बूथ्स की बात करते हैं, तो पोलिंग बूथ्स को हम कितना सुगम बनाए, एक्सेसिबल बनाए, साथ में विकलांगता को देखते हुए, क्योंकि नए अधिनियम के तहत 2016 के तहत जो है वो हम लोगों ने जो अपना नया कानून बनाया, तो उसको लागू करा देना वो बहुत आवश्यक है। और हमने आज के सत्र के लिए जब मैं नेट पर बैठा था, तो उसमें बहुत सी चीजें देख रहे थे कि करीब तमिलनाडु में 13,000 पोलिंग बूथ्स को जो था एक्सेसिबल बनाया गया रैंप के माध्यम से, और उनकी समस्याओं को देखते हुए, यहाँ तक कि एक बूथ पर जब विकलांग जन को जो है वो कठिनाई आई और दृष्टिबाधित थे, और उन्होंने कंप्लेंट किया कि हम अपना वोट डाल नहीं पा रहे हैं, ये समस्या है। तुरंत जो था वो पोलिंग बूथ ऑफिसर ने उनसे संपर्क किया, और अंततः वो उनके घर पे जो व्यक्ति जो वोट नहीं डाल पाए थे, वहां पे जो ऑफिसर थे वो गए और उन्होंने उसका बैलेट वोटिंग कराई। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में जो है ये एक अभियान है कि सबका वोट है जरूरी, तो विकलांग जनों का भी उतना ही जरूरी जो है वो वोट है, मतदान है। अब तमाम चीजों पे सरकार इस समय बहुत जोर दे रही है, और हमारे बीच में आज जो की नोट एड्रेस जिनका होगा इस विषय पे, वो जो है मिस स्मिथा हैं चेन्नई से, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक्सेसिबल इलेक्शंस करवाने की कंसल्टेंट हैं। आप बहुत मेहनत करती हैं, और हम लोगों ने इससे पहले भी एक ये जागरूकता वर्चुअल मोड में की थी, और उसमें भी स्मिता जी ने काफी मेहनत करी, और फिर ये डिसाइड किया कि सीआरसी में बात करी जाए। हमें बहुत फक्र के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय डॉक्टर रमेश पांडे जी, उन्होंने तुरंत कहा कि हाँ सर, हम लोग मिलकर ये प्रोग्राम करेंगे। और मैं बात भी बोलूंगा। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, आई एम कॉर्डियली इनवाइटिंग मैडम स्मिता to take the floor, and please give your wonderful presentation. I have seen your presentation in our last meeting. So I welcome all the team members of CRC who are doing very hard work, and I have been receiving their phone calls, their efforts in organizing this event. So I welcome all of you, और अब मैडम स्मिता
you please take the floor. Thank you very much, Mr. Amitabh. Am I audible? Yeah, you are audible. So it's really lovely to meet all of you here, and it is going to be a festival of democracy. What we are experiencing right now, what is happening across the state, across 5 states, is the festival of democracy, the festival of people. The India is known for unity in diversity, and this is the time that we are showing it and celebrating it basically. And for persons with disabilities, we have accessible election measures carried across all the polling stations across the entire state. We have ramps. If you look at physical accessibility, there are ramps which will be having an easy gradient, easy slope to for a wheelchair user to easily go up and come down, and there will be railings also. And apart from that, no obstacle should be there across the pathway from the entrance till the voting compartment. So that is how we have designed it. And this is for people with locomotor disabilities, for wheelchair users, or any other person with voter with disability. We have volunteers at the polling station, as well as we have wheelchairs. Yeah, many of us may not be willing to take may not be able to take our wheelchair to the polling station. So wheelchairs are available at the polling station. We can use that, and we can use the service of the volunteers. Apart from this, for voters with visual impairment, we have we have the braille ballot sheet, which people can use it, they can read it, and then they can touch the EVM's right hand corner. The last column of the EVM will be the braille numerals, which they can actually touch, feel, and they can press the blue button beside the whatever number they choose. So this is the facility that is available for people with visual impairment. So if you are going into the polling voting compartment, before that, just ensure that you ask for the braille ballot sheet. It is nothing but a candidate sheet, which will be available in braille. You can the presiding officer will be able to give you if you ask for it, and you can just read it. So that why Election Commission is making all these arrangements, it is to facilitate the dignified secret ballot, because people will be willing to help, but at the cost of our secret ballot. So it is secret ballot is our right also. Persons with disability have the right to secret ballot. That is why all these accessible arrangements are done, so that a voter with disability can navigate and can use the polling station, use the voting compartment without a person's assistance, without a person's interference. Apart from that, we have, if voters with hearing impairment or deaf voters come, they too can take the services of the helpers, the staff at the help desk, or sign language interpretation will maybe available with the control room, or with some special educators, some sign language interpreters may be assigned. So just ask for support and they will be able to provide you. And apart from this, all persons with disabilities, all voters with disabilities have priority queue, which means we need not wait in the queue. We can just enter into the polling station, and we will be allowed. Am I audible? Hello? Hello? Yes, ma'am, you are audible. Hello, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay, thank you.
Thank you. I will just switch off my camera so that I get the bandwidth. Network is very low. So if we are people with any disability, we have the priority queue, which means we need not wait in the queue. We can enter into the polling station and we can do all the processes, and we will be allowed to vote without waiting in the queue. Another facility is that if we are taking a companion along with us, our companion will also be allowed to vote after us. So our companion need not wait in the queue. And right now the postal ballot facility is going on. So just ensure that your polling station's booth level officer comes to your house and provides you with the form 12D. If you don't receive form 12D, then immediately you have to inform the election department. You have to inform your booth level officer, or you have to inform your district level accessible elections authority, or just call the helpline 1950. So somehow you can, or you can also contact Mr. Amitabh, or your organizations, and the organization can get in touch with the election department and ensure that you get form 12D at your home. And what is the facility of with form 12D? We can vote from our own house. The voting compartment, the entire polling station is going to come to our house, and we can vote with the with the convenience and with the comfort of sitting at home. And this being a COVID time, a pandemic time, postal ballot is considered to be very, very safe. And it also helps a lot for voters with severe disabilities or who have trouble in going out, or people with health disabilities like multiple sclerosis or blood disorders or something like that. So ensure that you get form 12D, and it is your option. You can choose. If you want to go to polling station and vote, you can very well do that. You can just tell that I don't want to take the postal ballot. I would like to go to the polling station and vote. And all the above mentioned facilities will be available in the polling station for all persons with disabilities, voters with disabilities. Apart from that, if you want to choose postal ballot, you can do that also. When the booth level officer is supposed to come to your house, and if you don't want to use it, you can just tell them that I don't want to use this, I want to go to the polling station, and they will take your consent and they will go. So other than this, what are available? We have parking available, in case if you are going in your own wheelchairs, or if you are going in your own vehicle, there will be barricades closer to the polling station, which will be moved by the police so that you can enter into the polling station in your own wheelchair or in your own vehicle. In case you are using a vehicle, then a parking space would be allotted closest to your polling station, so that you can just park your vehicle at a very close by location and get into the polling station, vote, and get back to your vehicle. So these kind of facilities are also available. And in case if voters with disabilities require a transport facility, that will also be provided by the district administration. So please download the PWD mobile app in your mobile phone, and you can ask for any facility through PWD app. You can, if you want wheelchair, or if you want the volunteer at the polling station, or if you want a transport support, you can ask for it. And you can also contact the helpline 1950 and ask for it. Along with that, if you don't know, if you have difficulty in accessing all these aspects, you can also contact your NGO head or your Mr. Amitabh, who can connect you with the election department, or get the BLO's number, your own booth level officer's number. If you can get, you can also contact him, and he or she will be able to facilitate all the accessible measures for you. And is this enough? Is the facilities alone enough? Don't we need information? So Election Commission is also facilitating information. So how do we facilitate these information? We promote
accessible elections. We promote the information through icons. We have persons with disabilities as ambassadors, election icons in every district, who are providing information about accessible elections in every district. And apart from that, we have the committees at the state level and the district level who are looking into accessibility aspects, monitoring whether all the accessible measures are being carried out in every district, in every polling station. So all these kind of back-end arrangements are also being made by Election Commission of India. And apart from that, for more information, what the commission is doing is through the sweep activity. Sweep is nothing but creating awareness. So through awareness activities is mock voting drill, which means like an experiential demonstration of how an electronic voting machine will function. So the department will be bringing the voting machine, the EVM, to your own institution, at your own doorstep. I mean, doorstep meaning at your polling stations or in the wherever the street plays are happening, wherever awareness camps are happening, and any institutions for persons with disabilities where people reside. So yeah, at those places or wherever camps or awareness programs are being conducted, this EVM is being brought and voting demonstration is being done, and it is experiential. So people can try it out so that they know how they should use the electronic voting machine, how it will feel, what is an electronic voting machine, everything they can touch and see, they can operate and see, so that they get first-hand knowledge on voting when they go into a polling station. And apart from this, one more facility that is available for people with visual impairment alone is or even for the person who has severe disability. You know, apart from all these facilities, if somebody is not able to vote on their own, I cannot exercise my secret ballot without a person's assistance. If that is the case, then that particular person, whether a person with visual impairment or a person with severe disability, can bring his or her own companion who can accompany him till the voting compartment and can help him to use the EVM, operate the EVM. So for some people, it may be pressing the button. For people with visual impairment, it may be pressing the button on their behalf. Or for people with severe disabilities, somebody should be putting little more pressure on their fingers while pressing the button. So any kind of assistance in operating the EVM can be done by a companion if only required. And if that is the case, such a companion should be signing a form 14A, which will be available with the presiding officer. So at the polling station, the companion will sign that form 14A and will accompany the person with severe disability and help him or her in operating the EVM. So, so all these kind of facilities are being made very consciously and very focusedly by Election Commission, and a complete non-negotiable aspect is that all polling stations should be on the ground floor. So, and especially why all these facilities are being provided, because Election Commission takes persons with disabilities and other marginalized groups very, very seriously, and their dignity and upholding their dignity is considered the most crucial thing in the festival of democracy. So when Election Commission is taking so much efforts, we all should acknowledge that. We all should exercise our franchise with dignity and show our commitment to democracy. And at the same time, we should also be monitoring agent for our own polling station. And in case
the polling station is not having certain accessible measures, we should escalate it, we should raise it up. And even when we see the facilitations, we should appreciate it and we should promote it in the social media. So with this, I would like to end here, and happy voting. In case you have any questions, I am happy to answer. Thank you. मैडम स्मिता जी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया है, और आपके यदि प्रश्न हो तो आप उसको चैट बॉक्स में लिखें, तो उसको हम लोग जवाब उसका देंगे. Any question or questions? मैं एक फ्लायर आया है IACP का, इंडियन एसोसिएशन फॉर सेरेब्रल पैल्सी. तो मुकलेश जी इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए डिस्प्ले कर दें. कि जो पोस्टर डेवलप किया है वो इंडियन एकेडमी ऑफ सेरेब्रल पैलेसी है. ये रैंप की सुविधा जो अभी आपको स्मिता जी ने बताया है, ईवीएम जिसमें ब्रेल हो, क्योंकि गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी एक बहुत बड़ी चीज है. तो यदि हमें मदद चाहिए तो मिले, लेकिन हमारे वोट को, वो वोट एक बहुत जरूरी चीज है अपने प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में. साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत है, जो खास करके जो लोग सुनने और बोलने की समस्या है. स्पेशल वॉलंटियर्स ही हर बूथ पे जो है उपलब्ध होगा, जिससे उसको जो है, जो बोल नहीं पाते उनको भी मदद मिले. ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के बारे में आपको स्मिता जी ने अभी बताया. और सबसे मुख्य चीज है हेल्पलाइन, जिसका नंबर 1950 है, उसका उपयोग करें. और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जितने ऑफिशियल्स हैं जिनसे हमारा डायरेक्ट हेल्प हो सकती है, तो उसका भी हम लोग देखते हैं, अगर नंबर मिले या 1950 से ही काम चल जाएगा. साइनेज की व्यवस्था होगी, क्योंकि जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं तो वो साइनेज के माध्यम से पहुंच सकते हैं. और प्रायोरिटी मिलेगी जो विकलांगजन जिन्हें वोट डालना है. तो ये एक फ्लायर है जो मुझे इंडियन एकेडमी ऑफ सेरेब्रल पैलेसी ने, उनके जो प्रेसिडेंट साहब हैं सर मल्लिकार्जुन जी, उन्होंने मुझे थोड़ी देर पहले ही भेजा था. और अब हम लोग वापस अपने सेशन में आते हैं. स्मिता जी, what you have presented in English, I wish to have the major ones to be translated in Hindi. Yes, please. I am also giving it in chat. Yeah. So you can please translate all the facilities. I am just typing the facilities in chat also. Okay. Till the meantime, I will take on with the presentation. Please, please. जो पोलिंग बूथ है उस पे रैंप की व्यवस्था, वॉलंटियर्स की व्यवस्था, एक्सेसिबल पोलिंग बूथ की जो वहां पे वो उपलब्ध होगा, जो विकलांगजनों की सुविधा के लिए होगा. नेक्स्ट.
और ईवीएम जो है, अगर किसी को दूर से ही करना है तो उसमें भी, जैसे लास्ट टाइम उन्होंने कॉल्ड वगैरह लगाया था कि उसको मूव किया जा सकता है और वोट डाले जा सकते हैं। साथ में अगर किसी को किसी प्रकार की असुविधा हो रही है तो वो वहां पे वॉलेंटियर या ऑफिशियल्स को बता सकता है कि क्या समस्या है और क्या मदद चाहिए। जो वोट डाले जा रहे हैं, अगर लो विजन है या विकलांगता ऐसी है कि वो उसमें उनको मदद की जरूरत है, वॉलंटियर भी जा सकता है और कंपेनियन जो साथी है वो भी जा सकता है। और इसके बारे में स्मिता जी ने बताया कि उसमें एक बटन रहेगा जो आपको, आप उसको प्रेस करके और उनकी गोपनीयता को हम लोग बरकरार रख सकते हैं और ब्रेल में भी वहां पे उपलब्ध होगा। तो इस तरह हम लोग जो है इस वोट को और भी सुगम बनाना चाहते हैं। साथ ही यदि कोई सीवियरली चैलेंज व्यक्ति है और आने में असुविधा है, लेकिन वो चाहता है कि जो वोट डालना है हम पोलिंग बूथ पे जाए, तो वो, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हम लोग या जो वोटिंग होती है वो भी एक जो है एक उत्सव होता है, लोग बाग मिलते हैं जाते हैं। लेकिन एक और बहुत जरूरी बात ध्यान रखनी है कि हम लोग कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करें, और मास्क है और आपका सैनिटाइजर है, इसकी व्यवस्था आप खुद रखिए। बूथ में तो जरूर, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि किसी प्रकार की कोई समस्या जो है किसी को ना हो, तो अपनी तरफ से भी तैयारी से रहिए। क्यू लंबी है तो क्यू से हटके, लाइन से हटके विकलांग व्यक्ति को प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि हमको दोनों चीजों को देखना है कि मतदान के साथ हम व्यक्ति का या अपनी कम्युनिटी का, सोसाइटी का पूरा ध्यान रखें कि उनको ये, क्योंकि अभी भी कोविड जो है वो फिर से जो है अपना एक लहर दे रहा है, लेकिन उम्मीद है कि ये चीजें तब तक काफी कुछ ठीक हो सकेंगी। और इसमें एक चीज ये भी है कि जब कोई विकलांगजन वो किसी अपने व्हीकल से आता है या उसे व्हीकल प्रदान की जाती है, तो वहां पे जो भी अवरोध लगे हैं उनको जो है हटा दिया जाएगा, जैसे कि विकलांग व्यक्ति अंदर जा सके और सुगमता से अपना वोट डाल सके। और इसके लिए तमाम व्यवस्था रहेगी, क्योंकि जो 2017 में हुआ था तो कहीं कहीं पे उसमें जो था पुलिस ऑफिशियल्स भी लगे थे, और उनकी जो पार्किंग की व्यवस्था थी वो जो है पोलिंग बूथ या जिस परिसर में था उससे सबसे नजदीक की जगह पे उनको जो है वो पार्किंग की व्यवस्था दी कराई गई थी। तो ये जो है तमाम चीजें हैं जिनको हम लोग पूरा ध्यान रखें। यदि कोई समस्या आती है या आप अपने स्तर से उन चीजों को आपको पता चलता है, तो प्लीज एंड प्लीज जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है वहां पे, और आप स्मिता मैडम को भी लिख सकते हैं, आप मुझको भी भेज सकते हैं। तो ये सब चीजें हम चाहते हैं कि इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम, जो विकलांगजन है वो भी एक इंसान है और उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए कि वो अपना जो वोट है वो आसानी से डाल सके। साथ में उनकी जो गोपनीयता है, जो सीक्रेसी है, वो भी बरकरार रहनी चाहिए।
Madam Ishwata, have I covered everything or something is left? I think you have covered. Covered, ना? Yes. तो हम लोग इन सब चीजों को देख रहे हैं, और जिस एरिया में सबसे ज्यादा विकलांगजन है वहां पे हो सकता है एक से ज्यादा पोलिंग बूथ लगे। हमारे उत्तर प्रदेश आयोग ने इसमें ऑलरेडी एक सर्वे भी किया हुआ है कि जिसमें अगर हम लोग पहले ही से अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस घर में विकलांग व्यक्ति है, उसकी स्पेशल नीड ये है, उसका फोन नंबर ये है, तो वो भी कमीशन पूरी प्रयास कर रहा है कि उनका पहले से स्पेशल नीड्स अगर पता होगी और वो लोग अगर जानकारी रखते हैं, जागरूकता होती है, तो आसान हो जाएगा जिस दिन की वोट डाला जाएगा। गांव के स्तर पे भी मुख्य जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होगी कि जो अपने पंचायत के क्षेत्र में जो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कुछ विकलांगता है, कुछ उन्हें मदद चाहिए, तो इंश्योर करें, क्योंकि हमें नीचे से अपने काम को शुरू करना है। आपके इसमें कमीशन ने एक क्या कहते हैं आपका वेबसाइट पे भी है कि आप वहां से, वहां ऐप भी है जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और सारी जानकारी ऐप के माध्यम से आपको उपलब्ध होगी। आप जिन जिन भी विकलांगजनों के को जानते हैं उनको प्लीज एंड प्लीज आप जो है इस बारे में बताएं कि वो उनको मदद कैसे मिल सकती है, जिससे कि वो अपना जो बहुमूल्य वोट है उसको वो दे सके। तो मेरे ख्याल से यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे भी कर सकते हैं, स्मिता मैडम से भी कर सकते हैं। ये आप देखिए चैट बॉक्स पे भी स्मिता जी ने जो है वो ये जो अलॉटेड जो भी प्रोविजंस हैं इनको जो यहाँ पे मेंशन किया है। एनी क्वेश्चंस, कोई प्रश्न अगर हो? सर मे आई स्पीक? बिल्कुल बिल्कुल बात कर रहा। Sir, thank you for nice session. Sir, there is a simple question that the data of persons with disability in a voter list are less in the comparison of the real voters. What is to be done to improve the number of voters to be listed in the voter list? So, to improve the number of people being enrolled in voters list, we have to have focused measures for enrollment. We can ask for conducting enrollment camps in our organizations. We can conduct enrollment camps in polling stations and ask people with disabilities in the community, in the locality to come and get registered. And apart from that, volunteers can be assigned by the associations, by the disability organizations, who can actually go to the houses of persons with disabilities and enroll them through the website, through ECI website. So website is an easy way of registering.
whereas many people with disabilities may not have the digital know-how of how to do it. So volunteers can help them. Volunteers can take their mobile, take their laptop to their houses and do that. And apart from this, focused measures should be carried out, like wherever there is a residential facility, we have to look out for people with disabilities residing at their residential area, whether it is a mental health institute, or if it is a prison or a homeless shelter. We should carry out focused measures so that we can identify people with disabilities and we can enroll them into the voter list, so that we can it can lead to betterment of people with disabilities data in the electoral roll. इसमें मैंने कहना चाहूंगा कि जो जागरूक हमारे विकलांगजन है या जागरूक परिवार जो जिनके हैं, तो वो ऐप के माध्यम से भी अपने को एनरोल कर सकते हैं। जहां तक अवेयरनेस की बात है, वो हम लोग जो है नेटवर्क के द्वारा जो मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंचना चाहते हैं। और अभी जो पास में जो हमारे एक हुआ था अवेयरनेस प्रोग्राम, उसमें हम लोगों ने नेशनल ट्रस्ट, राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत जो भी संस्थाएं रजिस्टर थी उनके बीच में भी किया। और अच्छा होगा जो लोग अपने क्षेत्रों में भी इसे करवा सकते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम। और जो मटेरियल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई जो सामग्री है, पोस्टर्स हैं, इनको जो है जागरूकता के तहत जो है वो डेवलप किया है, जिससे कि वो लोगों को सही जानकारी मिले और लोग उसका फायदा उठाएं। आप हम सब अपनी जिम्मेदारी लेते हैं कि आसपास में जो भी विकलांग लोग हैं उनको हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं, कैसे उनको हम वोट के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उनको डेमोक्रेसी के अंतर्गत जो हमारे राइट्स हैं, जो भी हमारे लिए प्रोविजंस हैं, उसका हम सही उपयोग करें और हम अपने को कमजोर ना समझें। जब सरकार साथ में है और पूरा इलेक्शन कमीशन की जो मशीनरी है वो भी इसमें दिन रात लगी हुई है कि कोई भी छूटने ना पाए। आपका जो प्रश्न था ये बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा श्री राजेश कुमार जी, और हम लोग इस बात को कमीशन से भी बात करेंगे कि इसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं। और थैंक यू सर, एंड थैंक यू अस्मिता मैम। Welcome, Mr. Dinesh. So as NGOs, what all of us can do, we can also carry out certain measures like in promotional activities, and many persons with disabilities in the community may not be aware of the facilitations provided for people with disabilities, voters with disabilities at polling stations. So we can promote it, and we can also look at the BLOs who are in our area, in our zone, and coordinate with them so that they ensure that they go to every homes of persons with disabilities and provide Form 12D. And we can also do one more thing. We can support the local election department, local administration, by providing them facilitations of accessible transport for people, voters with disabilities on polling day. And we should also be monitoring about the accessibility features, infrastructure of polling station. And we can do random access audits of as many polling stations as possible and provide the report and provide suggestions so that the local engineers can take conscious of that, and they can ensure accessible infrastructure at polling stations. So we can also do a lot of things. We should take up the role of monitoring agent, of promotional agent, of facilitating agent, of guiding agent. So we should take, our role is to partner with the election department
so that the festival of democracy is really celebrated by everyone. And the election will be successful only when everybody joins hands together. So all of us have a lot of responsibility to make this festival of democracy very harmonious, happy, and dignified experience for all persons with disabilities. जी सर, मेरी एक क्वेश्चन है. हेलो. हाँ, पूछिए. जी सर, मेरी क्वेश्चन है. सर, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ और ये हमने देखा है 2019 और 21 के दौरान इसका वायोलेशन होते हुए देखा है. तो पहले तो देखा कि जो एक्सेसिबल मशीन है वो हमें वोट से पहले तो दिखाया गया, लेकिन जब हमने बूथ पे गया, जब पूछा तो हमें साफ कह दिया गया ये तो अवेलेबल है ही नहीं यहाँ पे. तो एक्सेसिबल जो भी चीज़ है इसको धरातल में यदि लागू कैसे करवाया जाए, इस विषय में थोड़ा विचार करें तो अच्छा होगा. Ishwata ji, I am answering this question. Yeah, please. And can you also explain the question in English? And then please answer. He is asking that despite of all measures to have the prevention of malpractices in the voting, violation of rights, then because he cited an example that a person went and casted the vote, but when he checked the list, the name was not there. Okay. So what we should do is that is why, soon after the summary revision, the electoral roll is published, and we are given so much time to verify our name in our electoral roll. So there may be some mistake in our name, or there are possibility that our name is also missing, maybe because we did not register it properly, or some other mistake would have happened. So that is why Election Commission is asking again and again to verify our names in our electoral roll. So we have to do that, and when we find that our name is not there, immediately you please check, and if your name is not there, just immediately contact the local department, inform the helpline, and also mention in the PWD app. Even if you can find out your booth details in your PWD app, then you can be sure that your name is there in the voter list. So please download the PWD app, mobile app, in your mobile phones, and ensure that your name is there. And also, in case you need any other facility, just ask for it in the PWD app. Mr. Amitabh, you want to add anything? No, and only one thing I will like to say in this context, कि अगर हम मैल प्रैक्टिसेस पे नजर रखना चाहते हैं और उनको देखना चाहते हैं कि फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, तो हम भारतीय नागरिक हैं, आई एम एन इंडियन, तो सभी लोग जागरूक होंगे, तो इस तरह की कोई भी घटना होने से हम इसको रोक सकते हैं, जिससे कि फेयर इलेक्शंस हो. राजेश जी, आप कुछ बोल रहे थे. Yes, I agree. We all should be the ambassadors, the goodwill ambassadors for free, fair elections. Apart from accessible elections, it is not just that we should be happy with accessible elections available to us, but we should also be the goodwill ambassadors and responsible citizens in ensuring that our elections are conducted in a free and fair manner. Asmita ji, I want to add one more thing here. Okay. At the ground level, BLOs and the other functionaries who are involved in the election duties, they are not much more sensitized about the requirement and the assistance of the persons with disabilities. So such type of the training must be provided to the lower level functionaries and some NGOs who are working in the
persons with disabilities sectors must be appointed as a micro observer, so that the implementation of the rights of the persons with disabilities at the ground level, especially in the rural areas, could be done in the best way, I think. Correct. I agree with you 100%, Mr. Rajneesh. Actually, we have been asking the commission to allow persons with disabilities and NGOs or DPOs at the ground level to be observers. Right now, the Election Commission is having a provision of assigning IAS officers as access observers. So we have a specific category of accessibility observers or access observers, where IAS officers from one district will be assigned as an access observer to other district, and similarly from one state as access of observers will go to other states. So this provision is there, and there is also a provision of access observers meeting people with disabilities and DPOs at the ground level and taking their feedback on the accessibility measures that is prepared on the ground level. So please have an eye on that also and ensure that you meet the observers. These kind of things will actually ensure the monitoring and implementation at the ground level. Yes, I agree with you. One more thing I want to add here. It is that I think the Election Commission must give the notification and the advertisement of the mobile phone numbers of the accessible observer in the public media or the social media, so that the persons with disabilities or DPOs could approach them to fix up the loopholes at the ground level. Yeah, we will give that suggestion to the commission. Yeah. I will like to say in this particular question, it is very, very apt question. And अभी जैसा कि आपको बताया था कि जो हम आपसे ऐप की बात कर रहे हैं, तो ऐप जो है वो अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करी जा सकती है और उसमें आपको सारी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपके जानकारी आपको नहीं मिलती है तो आपके पास नंबर है, उस पर डायल करिए और वहां से उसको सॉल्व किया जाएगा। हेलो सर, सबके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हेलो सर। हाँ, बताइए। जी सर, मेरा एक सजेशन है कि जहाँ तक एक्सेसिबल वोटिंग की बात है तो क्यों ना जो बूथ लेवल पे जो ऑफिसर है उनको पहले एक्सेसिबिलिटी के बारे में अवेयर किया जाए, क्योंकि मैंने ये पाया है वोट देते जाते समय जब हमने एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो वो समझ नहीं पाते थे कि एक्चुअली एक्सेसिबिलिटी होती क्या है। तो इस तरीके से वायलेशन जो है ज़्यादा बढ़ता है। तो इस विषय में थोड़ा यदि आप फोकस करें ग्राउंड लेवल पे तो ज़्यादा अच्छा होगा। Yeah, good suggestion. Thanks, Alok. Election Commission is also conducting series of training to all the polling officials and the police and the booth level volunteers also. Actually, NGOs are also involved in this training process. And training videos are being made by NGOs and which is being used by the election department for training volunteers and polling officials on accessible measures, facilities to be provided to voters with disabilities. So you all have an equal responsibility, and please, you can promote sensitization to officials through social media also. So just mention like this last time I had this good experience, and thanks to the polling official, or thanks for the being so sensitized. And in case if there is a negative experience, just mention that and say that this particular experience was faced by me because of the insensitivity, or because of the improper training or lack of training
with the polling officials or with the election machinery. So please, be mindful of this. So if we can promote both the good and negative experiences that we have faced, that will be a really good booster for the election department to carry it further. Please keep making noise. Like, whether it is you face a good experience at the polling station or you face not so good experience at the polling station, make people aware that this is happening at the polling station so that everybody knows about it and the election officials also come to know about it. And then we can collectively build the system even more better. हेलो मैम। Hi. मैम एक्चुअली कुछ दिनों बाद हमारे एरिया में इलेक्शन है, कॉर्पोरेशन इलेक्शन, तो थोड़ा सा वहाँ पे देखिए कि वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का जो इशू है तो उसको थोड़ा सा रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि ये चीज़ सेकेंड टाइम भी होगा, ये हमें पता है। इसलिए मैं आपको पहले से ही अवगत करना चाहता हूँ इसके बारे में। वोट होने से पहले यदि आप इस विषय पे थोड़ा सा ध्यान दें, इसको रिजॉल्व कर पाए तो अच्छा होगा हमारे लिए। Yeah, so what you can do, you just go, your polling station, right? You just go and see your polling station and look at how accessible the polling station is and what are the issues there, and just write back to Mr. Amitabh or me or the local district administrator so that it can be taken up. Please copy to me and Mr. Amitabh so that we can also take it up. Yeah, sure, certainly. Because we want all the polling station details. So Good evening, when ma'am. you are giving some information about inaccessibility, mention the number and name and the location of the polling station which you are mentioning, and also mention exactly what is lacking, what is problematic in that polling station. So we need all these information to work further. True, true. क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण मतदान है, इसमें हम सबका दायित्व है Excuse me. कि हम लोग कैसे इसको। हेलो मैम जी, हमारे Can you be little bit louder? कोई प्रश्न कर रहा था, प्लीज आप अपना प्रश्न बोलिए। सॉरी सर, हम जो ये एप्लीकेशन जो लॉन्च की गई है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से, हम मतलब डिसेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी के लिए, तो वो हम एप्लीकेशन का नाम जानना चाहते थे सर। PWD ऐप। PW क्या सर मैम? वॉइस क्लियर नहीं है मैम, सॉरी। Please check in the chat. I have written it. PWD mobile app. PWD Yes ma'am, app. thank you. क्या CRC के डायरेक्टर सर हैं डॉक्टर रमेश पांडे सर? मिस्टर गणेश, तो स्मिता जी shall we then wind up because still we have time, और कोई भी अगर प्रश्न होगा तो हम लोग उससे बातचीत करना चाहेंगे।
Yeah, sure. If there is no more question, then we can wind up. हाँ, और इसमें जो है CRC से मिस्टर गणेश आप हैं, मिस्टर बुकलेश? यस सर। मैं ये चाह रहा था कि आप, क्योंकि CRC भी इसमें पार्टनर है, तो आपके उधर से जो सबसे सीनियर मोस्ट हों, तो थोड़ा 2 शब्द अगर कहेंगे तो अच्छा रहेगा। सर राजीव सर जुड़े हुए हैं सर। कौन? राजीव रंजन जी? यस। हाँ, राजीव रंजन जी। तो Namaskar, sir, and namaskar. thank you for your very kind presentation. I was listening throughout the presentation. It was very nice. बहुत बढ़िया था सर, और खास के जो हमारा कोलैबोरेशन रहा आपके साथ एक्सेसिबिलिटी और पोलिंग को लेकर के, और जो मैडम ने जिस तरह से बताया सर एक्सक्यूज मी। ठीक है जी। हेलो। हाँ सर, एक्चुअली हमने दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में हमने एक स्पेशल पोलिंग बूथ बनाया in 2021 for the PWD only, for the PWD. So we want to plan in the same way in UP elections also. I am ready to participate in that, but I didn't get any feedback, any reply from the election commission. Which district are you from? You can. Sorry? Which Jilla? Which district are you from? Actually, I am working in Delhi. I am myself medical officer. I am working in MCD, Municipal Corporation of Delhi. हमने 2021 में मैंने एक स्पेशल पोलिंग बूथ बनाया हमने, ऑर्गेनाइज्ड बाय PWD पर्सन्स ओनली. Yes, with Dr. Satendra. Under Dr. Satendra sir and madam, I have IAS madam का नाम I forgot her name, DM. Right now she is in DEPwD. उसके बाद हमने जो लास्ट ईयर में इलेक्शंस हुआ उस टाइम में भी मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैंने मेल भी किया है. वी वांट टू एस्टेब्लिश ए PWD स्पेशल पोलिंग बूथ पांडिचेरी एंड कुछ कई 3-4 जगह इलेक्शंस हुआ, उसमें मैंने मेरा नाम विथ माय टीम मैंने नेम्स प्रपोज किया फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इवन आई गेव माई रिमाइंडर्स ऑल्सो, रिमाइंडर्स भी दिया है मैंने, विलिंग भी दिया कि आई एम द PWD पर्सन एंड मेरे को एक्सपीरियंस है एंड हमने वैक्सीनेट करवा हमने वैक्सीनेटेड भी है, सब कुछ मैंने दिया, लेकिन I didn't get any feedback from the election commission. Yeah. So I have also communicated your interest to the commission, and at that time the pandemic was high, and from Delhi you have to travel to Pondicherry. So these things were a bit tricky at that situation, and COVID was also at a high stage. So that's why your request was not accepted. And now you can, since you are in Delhi, and which district do you belong to? Like, do you belong to Delhi? Do you belong to UP, or do you belong to some other state? Basically, I am the native of Telangana. Okay. I am from Telangana, but I shifted to Delhi 10 years back. Okay. So you are in proper Delhi, or you are in somewhere to the borderline of Uttar Pradesh, or? Sorry, I didn't get your point. Do you stay, are you located in proper Delhi, or are you somewhere in the border of Uttar Pradesh? No, I am working, my office location is Moti Nagar and my residential area is Janakpuri, but I don't have any objections. I will travel anywhere. I don't have any objection. Right. So you can approach the decision of polling station, setting up the polling station and
assigning polling officials will be done by the local district electoral officer, that is the district collector or the DM. So, yes. which is the complete call taken by the DM, and in case you have a few people who are interested in a particular district of UP, then you can actually intimate that particular DM or DO along with your name, and you can have the polling station set up. Okay. So just see if you can get a team in any particular district, because you are willing to travel from one state to another state, whereas how do they manage the other people? And No, so there should we have a also, team. We have a team of PWD persons. We don't have any issue. हमने last time हमने जब representation दिया, हमने वो सारे points mention भी किया है. Even हाँ हमने मिस गुंचा बत्रा अनुजा है, उनसे मैं हमने मिला भी है. She told me हाँ ठीक है, we will put up a file. But I am sorry to say we didn't get any response. yes, I know. There was a discussion about this, and but finally, because of the COVID protocols, commission could not actually facilitate your request. So this time, if you can approach a particular DM or even the CEO, if Uttar Pradesh is close by to Delhi, and if your entire team is in Delhi who will be traveling to Uttar Pradesh, then that may be easier. You just approach the additional CEO, Mr. Tiwari, and he may be able to guide you. Kindly, can you give his mobile number and email ID so that I will communicate with the concerned person? I can give you the email ID of Uttar Pradesh PU office. PUOP@gov.nic.in. अच्छा वो तो हाँ साइट में भी अवेलेबल है ना आई थिंक Yeah. Just say that kind attention, Mr. BDR Tiwari, additional chief electoral officer. So if you can just say in the subject and send a mail. Also copy to both of us, me and Mr. Mehrotra. My email ID is I'm giving it in the chat. हाँ प्लीज काइंडली चार्ट में दे दीजिए so that I will communicate. Okay, thank you, madam. Thank you. Sure. You can also take Mr. Tiwari's number from Mr. Mehrotra, Mr. Amitabh. I am giving you my mail ID. जी Okay, सर. Dr. Srinivas. जी सर. इसमें स्मिता जी, I will like to say that if he has done he has made a wonderful polling booth, accessible polling booth. So if it is possible for you, like I am available, and we can involve few officers also, and where Dr. Saab can give a demonstration or he can show us, because by seeing it becomes more effective also. Correct. So that is the intention of the Election Commission of India also. So in every state, we are having more and more polling stations manned by polling officials with disabilities. But the idea is to utilize the services of local employees of persons with disabilities and not getting, polling officials from other states. So that is the issue here, where the doctor was mentioning. He has to he and his team are from another state, whereas usually in the polling stations manned by persons with disabilities, people working or living in that particular area will be assigned. Preferable. Yeah. So your request is that way different. So you just send a mail to us. We will take it up and let us see. Actually, sure. Uttar Pradesh is very close by, so we can we can actually try this. हाँ yes. My point is also same कि I think we can plan adjacent to दिल्ली जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें प्लान कर सकते हैं. Sure. हाँ yes. So And you one mentioned more which thing, district? मैंने लेटर में भी मैंने लिखा है कि I want to work
any place and any position also. Being I am the class 1 officer also. If you want to post at any place, I am ready to obey. I am ready to take the challenge. Okay. You also give some suggestions like which is the close by nearby district and how many of you can come there. So give the list of your team and where they are from and how will you commute, because there are the training happens with the different on a series, like it is not just one training session that is happening, but it will be rolled over and over, and polling officials will have a series of training at different polling stations, and then only they'll be assigned finally, and nobody knows where we will be assigned. It is all done in a randomized thing. So, hope you know it, being having an experience of polling official. So that is why they always take polling officials from the local district, and they don't look into even other districts. So because it is another state, that is the issue being created. So you just look. You can actually give suggestions like which district would be closer to and which will be connected to the entire team, and how you will commute, and how you will get yourself arranged, yourself organized. So just give those suggestions also, so that the election department is confident on your proposal, and we can also suggest. Okay, ma'am. We will communicate with you, please. Yeah, By sure. mail and phone. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Welcome. मैं ये कहना चाहूंगा कि मैडम स्मिता जी ने और मैंने स्पार्क इंडिया दोनों का ईमेल दिया है चैट बॉक्स में, और जो भी आपकी समस्या है, दिक्कत है, तो आप प्लीज हम लोगों से जरूर शेयर करें, जिससे कि हम कलेक्टिवली इसको कमीशन के साथ ले सकते हैं, एंड टू ब्रिंग इट इन देयर काइंड नोटिस कि ये समस्या है और इसमें आपकी मदद चाहिए. ये आफ्टर ऑल द गवर्नमेंट मशीनरी इज इन्वॉल्व, एंड वी कैन डेफिनेटली take your voices, take your questions to the Commission of India, Election Commission of India. अगर आपकी कोई भी समस्या है, आप उसको लिख के भेजिए स्मिता जी को मेल आईडी पे और स्पार्क इंडिया मेल आईडी पे, और हम लोग मिलके इसको भारत सरकार, उत्तर प्रदेश जो आयोग है, इस तक इस बात को ले जाएंगे. Is it right? Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Clear. Thank you very much, Mr. Amitabh. Thank you very much to all the authorities of CRC-Lucknow. And it was a really wonderful session. Thank you. I think Mr. Nagesh is there. Mukleji. Yes, sir. Mukleji. नमस्कार सर. Yes, sir. सर नमस्कार सर. आज के इस अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिस यूपी in association with SPARC India and Composite Regional Center for Skill Development, Rehabilitation and Empowerment of Persons with Disabilities, CRC-Lucknow, PDUNIPPD, DEPwD, Ministry of Social Justice and Empowerment, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हम सभी के बीच में एक्सेसिबल वोटिंग फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी के रूप में एक महत्वपूर्ण भाव रखा गया, जिसमें केनोट स्पीकर के रूप में हमारे बीच कार्यक्रम के प्रारंभिक अवस्था से जुड़ी रही आदरणीय स्मिता सदाशिवन मैम, एक्सेसिबिलिटी कंसल्टेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारे साथ आत्मीय रूप में इस कार्यक्रम में जुड़े रिसोर्स पर्सन BDR तिवारी साहब, एडिशनल इलेक्टोरल ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। मॉडरेटर के रूप में अपने महत्वपूर्ण भाव संपूर्ण कार्यक्रम में प्रदान करने वाले आदरणीय डॉक्टर अमिताभ मेहरोत्रा सर, फाउंडर सेक्रेटरी कम डायरेक्टर स्पार्क इंडिया। और इस कार्यक्रम के चीफ पैट्रॉन श्री रमेश पांडे सर, निदेशक CRC लखनऊ। सभी का
मैं CRC लखनऊ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी ने आत्मीय भाव से और अपने प्रत्यक्षीय शब्दीय भाव से हम सभी को दिव्यांगजनों के संदर्भ में मिलने वाली उन सुविधाओं के बारे में महत्वपूर्ण रूप से बताया, जिन पर हम प्राप्ति की आशा से आगे बढ़ करके दिव्यांगजनों के लिए एक सुगम एक्सेसिबल इलेक्शन को कैसे बना पाएंगे, जिसमें विशेष रूप से आपने बताया कि दिव्यांगजनों को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा रैंप और व्हील चेयर की सुविधा प्रदान की जाएगी, ब्रेलीकृत ईवीएम की व्यवस्था की जाएगी, साइन लैंग्वेज की व्यवस्था की जाएगी, स्पेशल वॉलंटियर्स वहां रखे जाएंगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाएगी, वोटर हेल्पलाइन चलाई जाएगी, साइनेजेस दिए जाएंगे, प्रायोरिटी एक्सेस दिए जाएंगे। इन सभी व्यवस्थाओं से हमारे दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे और धरातल पर ये व्यवस्थाएं उन तक पहुंचेंगी। इन्हीं भावों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और संपूर्ण CRC परिवार की तरफ से स्पार्क इंडिया, जिन्होंने इस कार्यक्रम का संपूर्ण ताना बाना बनाया और संपूर्ण कार्यक्रम को आप सभी के बीच रखा, उनको भी सादर प्रणाम करते हुए डॉक्टर अमिताभ मेहरोत्रा सर को सादर प्रणाम करता हूं कि आपके अथक प्रयासों से यह कार्यक्रम साफल्यभूत हुआ। पुनः स्मिता सदाशिवन मैम का धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम को यहीं पूर्ण करता हूं। सभी को सादर धन्यवाद, सभी को सादर प्रणाम। Thank you very much. It was lovely to interact with you, all of you. Thank you. Smita, Happy voting. Smita,